current electricity. Let us first define what do you mean by current. I hope all of you know it. Current is nothing but what? Rate of flow of your charge. Okay. So now I'm talking about rate of flow of charge. We talk about two types in this one beta. One is how to calculate the average current, and that means in a given interval, like 0 to 5 seconds, 1 to 2 seconds, what it may be. In that case, we use the formula of I is equals to your delta Q divided by your delta, isn't it? The same way when we talk about instantaneous current, okay, so I instantaneous will be equal to, we'll be using the formula dq divided by dt. I hope you got the difference between both. The first one is about your average current, the second one is about your instantaneous current. Okay, now say when current is zero, when I is zero, then what happens to the current beta? I mean to say instantaneous limit, then the current will be, what happens to it? If the current is becoming zero, current will change the direction. Current changes its direction. जैसे kinematics में करते हैं ना उसी तरह से. Final velocity zero होती, that means it is ready to take the U-turn. ठीक है? Let's say if I give you an example, let's say charge is given for me, like say t square exponential to the power of minus 2t. The question is, find time when current changes its direction. Changes its direction. चलो कोई करके बताइए. Current is being given. That means charge is given for me. Q is equals to your exponential to the power of minus of your 2t. तो करंट कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग? I is equals to your dq divided by dt, isn't it? And that is your differentiation of your t square exponential to the power of minus of 2t divided by your dt. Then can anyone do the differentiation of this one fastly? Differentiation of t square is nothing but for me 2t. Then exponential to the power of minus 2t will be as it is, plus then again exponential to the power of minus of 2t will be kept as it is, and differentiation right now for me exponential, I'll keep the value of t square as it is right now for me. So this will be equal to minus of 2 into your t square, isn't it? That means for changing the direction, what I told you, I should be make it as to be 0. That means this total term should be made to be equal to your 0. So that means this will become for me 2t, sorry. So this will become for me 2t. This will be 2t exponential to the power of minus of 2t is equals to your, this is a 2. This will be called for me t square exponential to the power of your minus of your 2t. Exponential to the power of minus of your 2t. Am I clear? Anything is getting cancelled here? This 2 will get cancelled right now. Exponential to the power of minus 2, exponential to the power of 2 will get cancelled. This t square and this t will get cancelled. So t is coming out to be how much will be? 1 second. So t is equals to 1 second. It will change its direction. I hope you got it. So when charge is been given and is asking the time at which the current will change the direction. So whenever the current is been changing the direction, then I should take the value of your I to be equal to 0. ये याद रख लीजिए बेटा. So then current changes the direction. Clear है? एक और एक क्वेश्चन करोगे जल्दी से. देखो जल्दी से एक क्वेश्चन देख लो. अगर मैंने आपको चार्ज दे रखा है Q is equals to TQ exponential to the power of minus of your 3t. Got it? मान के चलो 40 आपका बेसिकली exponential to the power of your
minus of your 4 into your t. Same question is run right now. Find the time when the current changes its direction. Find the time when current changes its direction. Change its direction. चलो जल्दी करके बताओ. सेम मॉडल ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया तो अभी आपको लोग करना है. बेसिकली चार्ज दे रखा है और पूछ रहा है करंट नहीं पूछ रहा हो. करंट नहीं पूछ रहा है. इज आस्किंग द टाइम एट व्हिच द करंट इज बिकमिंग फॉर मी जीरो फॉर मी. Am I clear with this one? चलो जल्दी से करंट निकालो पहले. I is equals to d cube divided by dt निकालेंगे. isn't it? So अब इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए. मैंने कर रहा है यहाँ पर. This is 3 into t square exponential to the power of minus 40 as it is रहेगा plus minus of your 4 as it is exponential to the power of minus of 40 into t cube as it is कर दो. This total must be equal to your 0. This total must be equal to how much will be 0. Yani this will be 3t square exponential to the power of minus of 40 will be equal to your, this is minus of your, minus मतलब ये plus हो गया. This will become for me your 4 t cube exponential to the power of minus of 40. ये वाला चले गया and t square में so t चले गया. So we are getting t value is equals to 3 by 4 seconds. Clear? Very good. Got it beta? Chalo. One more concept. Calculation of your average current. Calculation of your average current from current time equation. Then, so we are talking about your calculation of your average current from your current and time equation. Isn't it? मान के चलो, for example, it is given for me that the function of your time. I is the function of your time. Isn't it? So now in order to do such type of equations, isn't it? If I is given as of your function of your time, then what you do is I average value can be calculated by the formula integral of your I into dt. What you'll do in kinematics the same way, divided by integral of your dt. Limits will be from t1 to t2. Every limit will be from t1 to your t2. Isn't it? So integral of I into dt will be equal to how much for me, beta? Charge flown divided by time. That will be your average. ठीक है ना? या कभी ग्राफ भी दे देता है बेसिकली. अगर ग्राफ क्वेश्चन आ रहा है बेसिकली तो देखिए कैसा करना है. तो मान के चलो ग्राफ कंडीशन दे रखा है. मान के चलो ऐसा कुछ करंट वर्सेस योर टाइम का ग्राफ दे रखा है. दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर टाइम फॉर्म. कुछ भी ग्राफ दे रखा है बेसिकली, माइट बी एनी फंक्शन राइट नाउ. सो मान के चलो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने ऐसा कुछ. सो ये हो गया एक इनिशियल लिमिट और यहाँ हो गया इसका एक इनिशियल लिमिट. isn't it? तो ये पूरा यहाँ पर जो इसका रहेगा ना, दिस विल बी द एरिया अंडर योर टाइम एंड एज वेल एज ऑफ योर करंट ग्राफ. ठीक है ना? ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव लेना है बेसिकली. So from this one I can say that इसका भी अगर एवरेज निकाल रहे हो बेसिकली, I average I can even write like this, I bar is equals to integral of your I into dt divided by integral of dt. And you know that in basic mathematics, integral of I into dt will always gives me what beta? Area. So area of your current versus your t graph. Current versus your t graph divided by integral of your time. That will be equal to how much for me? Time. Isn't? Yeah, we can say total time. That will give me the average current. Am I clear? So average current will be equal to what for me, right? Area under your IT graph or charge flown. I can also say that one more formula I got right now. This one is nothing but of your charge flown divided by time. ऐसा भी निकाल सकते. इन दोनों में से you can use any one relation to calculate the average. अगर ग्राफ है तो इससे निकालोगे. अगर चार्ज है तो डायरेक्टली I average is equals to charge flown divided by your time. ठीक है ना? I hope you got it everyone. So I average is equals to your integral of your I into dt divided by integral of your dt. ऐसा करो. या अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो डायरेक्टली you can use the formula of your
charge flown divided by your time taken for. So provided that I is the function of your time. Yeah. छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को देख लीजिए इस पे कैसा क्वेश्चन करेंगे यहाँ तक पूरा काइनेमेटिक्स में भी आप लोग ने सुना है बेटा यू माइट हैव बीन ऑलरेडी डन दिस ऑल थिंग अ लॉट इन द काइनेमेटिक्स आल्सो सो मान के चलो इफ आई हैव गिवन यू इफ I is equals to 4 minus of 2t. This is given equation and is asking us to calculate or find average current. Average current. So try करिए. Anyone? Find the value of your I average or average value of your current. Anyone? So I is given as a function of time ना बेटा मैंने अभी बताया आपको I average will be equal to integral of your I into your dt divided by integral of dt. अब टाइम नहीं मालूम मेरे को तो क्या करना है मुझे isn't it? So now take initial time must be equal to 0. Now tell me at what time the current will become for me 0. So I is equals to 0 मतलब 4 minus 2t is equals to 0. 4 is equals to 2t, 2 ones are 2 twos are, so t is equals to 2 seconds. Okay, so I is equals to what? T is equals to 2 seconds. It is becoming right now for me 0. So the limit will be equal to how much for me? 0 से लेके 2 तक और इसका भी 0 से लेके 2 तक. The values डाल दीजिए. So that will be equal to your integral of your I value is how much for me? 4 minus 2 into your integral of dt divided by integral of your dt. Limits are from 0 to your t. That is t is nothing but 2 seconds and 0 to your 2 seconds. Am I clear बेटा? Am I clear? So इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए 4 into dt is nothing but equal to 4t minus of this one will be integral of 2 into dt. कितना हो जाएगा बताइए कितना बनेगा 2t है ना बेटा ये तो 2t बाहर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 4 t into dt is nothing but equal to how much for me t square divided by 2 isn't it? So this will be equal to t square लिख लो मैं directly और limits will be equal to for this one 0 से लेके 2 तक will be the limit divided by integral of dt is nothing but t and the limit will be from your 0 से लेके 2 तक ठीक है. So now if I need to write the value of your limits so आप upper limit minus lower limit कर लीजिए right now for me तो क्या आ जाएगा देखिए in the place of t upper limit 4 into 2 minus 0 minus this one is right now for me 2 square minus of 0 square divided by 2 isn't it? So this value will be equal to how much for me 4 to the 8 minus 2 square is nothing but 4 divided by 2 8 minus 4 is nothing but 4 4 by 2 so 2 ones are 2 twos are so it will be equal to how much for me 2 amperes. Current is measured in amperes and you know that current is a scalar quantity. Am I clear? Am I clear? So what is an average current मतलब आप क्या लिखोगे बेटा average current will be equal to I average is equals to right now for me 2 amperes. This will be the answer for. Am I clear with this one? ठीक है. So I hope you got an idea how to do the problems in which the currents and averages have been given. अगर ग्राफ वगैरह भी दिया तो you can even do the question like that basically. ठीक है ना. चलो और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. मान के चलो charge is given for me q is equals to your at minus of your b into t square. Now find the average current for this one. Find average current. चलो ट्राई करो जल्दी से. Charge is given as a function of time यहाँ पर. Charge is given as a function of time. So current will be equal to how much better? I is equals to what will be the current? I is equals to dq divided by dt. So that is equals to A is constant. So this will be equal to your A बाहर आ जाएगा. dt by dt is nothing but t minus b बाहर आ जाएगा. Differentiation of t square is nothing but t.
को करना क्या है, करंट को जीरो कर लीजिए. सो इट इज a minus of 2b into t. So at what time the current will become for me zero? A is equals to 2b into t. So at the time t is equals to a by 2b, the current will become for me zero. Average कभी भी निकाल रहे तो पहले करंट कब जीरो बन रहा है ये फाइंड आउट कर लीजिए. यानी करंट विल फ्लो फ्रॉम व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम बेटा. तो ये हो गया मेरा फाइनल और इनिशियल टाइम मस्ट बी इक्वल टू जीरो. So t is equals zero and t is equals to final. That is nothing but a by 2b. ठीक है ना. देन अपने को निकालना क्या है अभी, आई एवरेज. तो आई एवरेज मतलब ऐसा कुछ लिखोगे, आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर आई इंटू योर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी, isn't it? So what are the limits beta for this one? 0 to your, sorry, initial limit is right now for me 0 and final limit is nothing but a by 2b. This is also 0 and the limit is your a by 2b. ठीक है ना. So that is equals to integral I की वैल्यू कितनी है बेटा, I की वैल्यू I got as of your a minus 2b into t and integral of your ये हो गया dt, limit will be 0 to your a divided by 2b divided by integral of dt is nothing but t, limits will be from 0 to a divided by 2b. ठीक है ना. अब ऐसा करोगे तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा बेटा. तो आप डायरेक्टली देखो अगर चार्ज दे रखा है तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी कर लिए, isn't it? So we'll be getting the charges right now from that one. तो उससे आई एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेसिकली. ठीक है ना. अब क्या करो आप राइट नाउ इसमें से इसको इंटीग्रेट कर लीजिए एंड यू ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन. So I average is equals to, this is integral of your a into your dt minus integral of your dt into your dt divided by, this one is upper limit minus lower limit, so it is a by your 2b. ठीक है ना. लिमिट्स तो आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी. सो दिस विल बी योर आई एवरेज, ए विल बी आउट, इंटीग्रल ऑफ टी विल बी इक्वल टू योर टी, तो लिमिट विल बी इक्वल टू योर ए बाय योर 2b माइनस 2b बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल ऑफ टी इनटू dt इज नथिंग बट t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू a पर 2b, 2 will be getting cancelled here, so it is your a divided by your 2b. ठीक है ना. So this one value will become for me a into your a divided by 2b minus, this one is right now b into, in the place of t upper limit, that is nothing but a by 2b ka whole square divided by a by your 2b. ठीक है ना. क्लियर है बेटा. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर. So this value will be equal to a square divided by 2b minus of your a square into b divided by 4 into your b square divided by a by your 2b. मैं से सिंपल मेथड भी बताऊंगा, अब पहले एक बार ऐसा मेथड करके देख लीजिए. b स्क्वायर ए बी चले गए, तो दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी a square divided by 2b minus a square divided by your 4b divided by a by your 2b. ठीक है ना. So I can take right now in this one a square divided by b will be common. 2b अगर मैं कॉमन ले लिया 1 minus of 1 divided by 2 होगा divided by a by your 2b. ठीक है ना. So this value will become how much for me बेटा, 1 minus 1 by 2 is nothing but 1 by 2 यानी a square divided by b into 2 divided by your a. So square a will get cancelled and b will get cancelled. So it will be equal to how much for me, 2 times of your a square में से a बच गया, this will be equal to your 2b है ना यहाँ पर. Sorry, this one is a square by your 2b, तो 1 minus 1 by 2 is nothing but half, तो ये half चले जाएगा, तो it is a square by your b बचेगा. So this is 2b divided by a, so this will be equal to your 2a. Done. a divided by, हाँ मतलब a स्क्वायर है ना बेटा, उसे कैलकुलेशन देख लो जैसे किया मैंने यहाँ पर. So I don't know what I have done here right now. जल्दी से कैलकुलेशन देख लीजिए. This value will be equal to a square by 2b. This is your a square by your 4b.
So I can take a square divided by b will be common. So it is 1 by 2 minus of 1 by 4 divided by a by 2b. तो यहाँ पर ऐसे x square और ये चले जाएगा, isn't it? And you can simplify the relation for this one. ठीक है, ऐसा करो, या आप इसको ऐसा कर सकते हो सिंपल कंडीशन में। आप करना क्या है, वैसे बोले आई एवरेज निकाल रहा है ना, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूँ यहाँ पर। पहले फाइनल चार्ज निकालो। सो फाइनल चार्ज विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, दैट इज व्हाट इज द चार्ज का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, देख लो जल्दी से। Q is equals to AT minus BT square. Q is equals to your AT minus of your BT square. At what time the charge is becoming for me zero beta? T is equals to how much for me? A by 2B. तो आपकी वैल्यू डाल दीजिए वहां पर। So it is your A into your, this is your A by 2B minus of B into your A square divided by your 4 into your B square. तो उसी तरह से Q फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू A square divided by 2B minus of your, this value is right now for me AB square चले जाएगा, so it is A square divided by 4 into your B. तो क्या क्या इनिशियल चार्ज कितना आ रहा है बेसिकली राइट नाउ, सो Q फाइनल विल बी इक्वल टू योर राइट नाउ A स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 4B, isn't it? तो ये Q फाइनल हो गया, और Q इनिशियल विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा, 0. Q initial will be equal to your 0. So I average निकालना है मुझे. So I average will be equal to right now for me. So what is the charge right now for me? I can write I average कैसे निकालेंगे? Delta Q divided by delta T. Sorry. Delta Q divided by delta T. Delta Q मतलब कितना आ गया? A square divided by 4B divided by time interval will be equal to how much for me? A by 2B. ठीक है ना, तो ये स्क्वायर और ये इसमें से एक चले जाएगा, स्क्वायर चले जाएगा, so इसमें से b और एक b चले जाएगा, so it will be equal to your a divided by 2. ऐसा भी कर सकते हो, वही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब ऐसा भी कर लो, वही आंसर आएगा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, so we'll be getting ultimately for me your a by 2. क्लियर? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। चलो हाँ, आ गया बेटा, चलो। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट एरिया होता है अपना वेलोसिटीज निकालने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, drift velocity represented by Vd. Okay, so उसमें से हम लोग पहले फॉर्मूला याद रखते हैं बेटा, I is equals to V ना, VENA, and this one is drift velocities I am representing by Vd. So drift velocity will be equal to current divided by E into N into your A, ऐसा भी लिख सकते हो, isn't it? In terms of electric field लिखना है अपने को, drift velocity is also equal to your charge of electron into your electric field into your time, that is relaxation time, divided by mass. Or else I can even write like this, it is your E into your potential into your tau, that is nothing but of your relaxation time, divided by your M, divided by your M into your L. Because electric field will be equal to what? Negative potential gradient, E is equals to V by L. आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा. So electric field, E is right now for me what here? Electric field, and V is your potential, electric potential, and L is your length of conductor, यानी जो भी एक कंडक्टर ले रहे हैं बेसिकली अपन, isn't it? तो इसका जो लेंथ होगा that will be equal to your L, and it is connected to one positive and as well as of your one negative term. Okay. If shape is constant, or I can say that if shape is very uniform, then drift velocity will be constant. वरना drift velocity change होते जाएगी बेटा, isn't it? जैसे मान के चलो, if I'm talking about non-uniform rod, non-uniform rod, ऐसा कुछ है मेरे पास एक, ठीक है ना, इसका एरिया यहाँ पर एक होगा,
और इसका एरिया यहाँ पर 1 होगा, and there is a flow of current like this. ठीक है ना, that is connected to one positive terminal and here right now one negative terminal. So somewhere if I'm taking some points here right now, beta, this is your point P, this is your point Q, and this is your point R, isn't it? And this one is totally connected to positive terminal, and this one is connected to your negative terminal. Then you know that electric field at a point P will be greater than at your Q, and Q will be greater than at your R. Because E is equals to V by L. As length increases, electric field will be decreased. ठीक है ना? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट योर पी विल बी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट योर क्यू, दैट विल बी ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट योर आर. क्लियर? और यहाँ पर टाउ क्या होता है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम. टाउ इज नोन एज व्हाट फॉर मी? रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम. ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए. अगर टेम्परेचर बढ़ा देन रिलैक्सेशन टाइम याद रख लेना. अगर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, रिलैक्सेशन टाइम विल बी डिक्रीजिंग. Okay, if number of free electron density, that is nothing but En, if it is increasing, then relaxation time will be decreasing. Very important theoretical question है. Relaxation time अगर temperature increase हो रहा है तो it will be decreasing, और अगर free electron density भी increase हो रहा है तो relaxation time will be equal to decreasing. Okay, as the temperature increases, isn't it? So what is happening right now for me? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीजिंग ना, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन इंक्रीज होगा. सो रिलैक्सेशन ऑफ टाइम विल बी either increasing or decreasing, that depends upon the temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ गया then we'll be writing the value that relaxation time will be or decreasing for that. Done? Sure. Ohm's law. So what is the Ohm's law beta? याद है जल्दी. V is equals to I into your R. V is potential, I is current, R is resistance. That is, potential is directly proportional to the current. Potential is directly proportional to your current. Okay. And resistance of formula क्या होता है बेटा? R is equals to rho into L divided by your E. Resistance depends upon the material, it depends upon the temperature, and also depends upon the dimensions. Very important बेटा. Resistance किस पे depend करता है बेटा? It will depend upon material. कौन से material से बना हुआ उस पे depend करेगा. क्या temperature दे रहे हो आप उस पे depend करेगा. And also it depends upon your dimensions. क्या ना लंबाई चौड़ाई जैसा दे रहे हो ना उसके हिसाब से भी it will be trying to depend upon that. And always try to remember slope of your VI graph. क्या देगा बताइए? कैसा देगा? How do you calculate the slope? Slope of your VI graph will be equal to how much for me beta? Tan theta. So tan theta will give me right now for me what? Resistance R. यानी V by I. Potential versus your current का graph अगर हम लोग ले रहे हैं right now like ऐसा कुछ. V versus your I graph. It will be a straight line passing from origin. This will be the theta. ठीक है ना? Clear? अगर मैं स्लोप ऑफ IV ग्राफ पूछूं, स्लोप ऑफ योर IV ग्राफ क्या देगा बताइए कुछ? दिस इज योर I एंड दिस इज योर V. दिस विल बी द एंगल, मान के चलो थीटा. यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू योर I by V. सो tan थीटा इज इक्वल्स I by V मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 1 by R. Okay, VI graph will give me the resistance and IV graph will give me the reciprocal of your resistance. Clear?
Sure. Next one and very important topic, beta. Current density. Current density. Represented by letter J bar. It is a vector quantity. Electric current is a scalar quantity, but current density is a vector quantity. So current density is current flowing per unit area. It has the direction. तो इसीलिए मैंने n cap से represent किया. ठीक है? N cap represents me the unit vector in the direction of your field. Clear? Am I clear बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं बेटा इसमें. देख ली, जैसे मान के चलो करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू योर I by your A. I is equals to क्या लिख सकता हूँ मैं? V divided by R into resistance here. Isn't it? That is equals to V divided by resistance is equals to rho into L divided by A into your A. A and A will get cancelled. V by L is nothing but E. So it is your E divided by rho. Very important. So J bar is also equal to your E divided by rho. Okay. Or else I can write E bar electric field is equals to your rho into your J bar. Electric field is equals to rho into your J bar. Clear? Current density is equals to I by A. And current density is also represented by E by J, or E is equals to your clear? इसमें भी थोड़े प्रॉब्लम्स बनते हैं बेटा अच्छे खासे. जैसे मान के चलो I'll try to do it on 1 or 2 models. अगर मान के चलो करंट डेंसिटी अपने पास कांस्टेंट है, isn't it? Then we'll be using the formula of right now. I is equals to J bar dot A bar. ठीक है? उसी तरह से अगर J is variable, J मतलब क्या? Current density. If J is variable, then the current can be calculated by I is equals to, you can use the concept of your integration. So I is equals to your integral of your J into your dA with the proper limits. और ग्राफ्स के अंदर भी लेते हैं बेटा. ग्राफ से कैसा करोगे? I'm doing with the help of your graph. Okay. So now see, just roughly I'm drawing right now. I'm drawing a graph between current density versus your area. इसके अंदर जो भी एरिया रहेगा बेसिकली ये वाला. So area under J graph will always gives me what? Current. Okay. Area under your J and A gives me what? Current. Clear? चलो जैसा मान के चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको रफली, हाउ विल गेट एन आइडिया. मान के चलो देयर इज अ करंट गिवन फॉर मी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मैंने आपको एरिया दे रखा है. ए इज इक्वल्स टू मान के चलो 2i कैप प्लस ऑफ योर 3 into your j कैप. यूनिट इज मीटर स्क्वायर. फाइंड डेंसिटी दे रखा है मैंने. j बार इज इक्वल्स टू सम वैल्यू जो भी कंडीशन दे रहा है. j इज इक्वल्स टू मान के चलो सम अराउंड 3i कैप माइनस ऑफ योर 4 into j कैप. ठीक है. एंड यूनिट विल बी इक्वल टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. I need to calculate the magnitude of the current. Calculate what? Magnitude of your current. Magnitude of your current. देखो क्या हो सकता है. एरिया है और जे भी है, isn't it? And it is a dot product, isn't it? चलो जल्दी से कर दो. Anyone? I is equals to J bar dot A bar. J की वैल्यू कितनी है बेटा? 3i कैप माइनस ऑफ योर 4 into your J कैप, isn't it? Dot. This will be equal to 2i cap plus of your 3j cap. Cross multiply करना है ना बेटा. So this will be 3 2s are 6. I dot into I dot is nothing but 1 minus 4 into 4 2s are I. J dot into I dot will be equal to 0. Then j into your 2, that is 0. 4 3s are 12. That will be the answer for this one. So it is minus of 12. So this value will be equal to minus of your 6 amperes. Done. Very good.
ओके चलो नेक्स्ट वन। अगर ग्राफ वगैरह भी दिया तो आप कर सकते हो बेटा, जैसे मान के चलो अगर मैंने रफली कुछ ग्राफ दे रखा है, कैन इवन डू इट विद द हेल्प ऑफ योर ग्राफ्स, बट आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ। बाद में प्रॉब्लम्स वगैरह टाइम पे कर लेंगे, जल्दी से एक बार नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। वेरिएशन ऑफ योर रेसिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस with your temperature, variation of resistance with temperature, फॉर्मूला याद है, T will be equal to, yeah, resistance at your T degree Celsius will be equal to your R naught into 1 plus alpha into temperature difference, T minus of your T naught, ठीक है। T naught is nothing but T naught is your 0 degree Celsius का temperature, R naught is nothing but resistance of the resistance at 0 degree Celsius, and alpha is your temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance, okay. Or we can say about your resistivity, isn't it, or resistivity. Unit is for this one 1 by degree Celsius, and T is your general temperature beta. Capital T is your any general temperature, कोई भी temperature apart from 0, and capital R is equals to resistance at temperature T, जो आपको निकालना है बेसिकली, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आई कैन राइट द फॉर्मूला राइट नाउ, R is equals to R naught into 1 plus alpha into T। ये फॉर्मूले कहीं देखे सबका दिखाई दे रहा नहीं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी सेम फॉर्मूलेस आते हैं बेसिकली, ठीक है ना। बट टी इनिशियल 0 है तो मेरे पास अल्फा वैल्यू इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव है, which is being used for your conductors, for conductors we can say that अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड अल्फा वैल्यू इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, पीरियोडिकल क्वेश्चन से बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेरी पेक्युलर है, यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है ना। एंड अल्फा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 फॉर अलॉयज, यानी अगर टेम्परेचर अपना इंक्रीज हो रहा है, the temperature is increased, then resistance के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, so it has no effect on it, clear। very important formulas, clear। तो ग्राफ बता सकते हैं क्या भाई, R is equals to R naught into 1 plus alpha into T का ग्राफ क्या होगा बताइए। सो R इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, R is equals to R naught plus R naught alpha into T, ठीक। तो अगर मैं इसका ग्राफ ले रहा हूँ बेसिकली, दिस विल बी द ग्राफ फॉर दिस स्ट्रेट लाइन बट नॉट ऑरिजिन। ये हो गया मेरे पास R naught, I'm taking on y-axis resistance, on x-axis I'm taking the temperature, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, कोई बताएगा। दिस विल बी द थीटा, so slope will be equal to how much for, slope is equals to tan theta, so tan theta will be equal to R naught into alpha, so tan theta is equals to delta y divided by delta x, ठीक है ना। डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा r divided by delta t, डन, क्लियर।
नाउ समथिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़ा कंसंट्रेशन करना, रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये वाला थर्मल प्रॉपर्टीज में भी आया होगा। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना, टेम्परेचर कोफिशिएंट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बच्चे स्किप करते हैं इस टॉपिक को यहाँ पर, उस पर थोड़ा ध्यान दें। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले रहा हूं मैं बेसिकली। फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मान के चलो एक रेसिस्टेंस है मेरे पास यहाँ पर, देन अनदर रेसिस्टेंस इज समवेयर हियर राइट नाउ, और इसका रेसिस्टेंस है मेरे पास आर नॉट वन, और इसका रेसिस्टेंस है आर नॉट टू, मेड अप ऑफ अल्फा वन एंड मेड अप ऑफ अल्फा टू। ठीक है, तो अल्फा ऑफ योर इक्विवेलेंट, अल्फा इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन will be equal to, फॉर्मूला याद रखो, summation of your r into alpha divided by summation of your r. This is your formula. R equivalent is equals to this one. मतलब what do you mean by this one? Alpha in series दोनों के लिए alpha equivalent will be equal to r naught 1 into alpha 1 plus of your r naught 2 into your alpha 2 divided by r1 plus r2. That will be the answer. Am I clear? Clear बेटा? इस पे मैं केस दे रहा हूँ, देखिए बेटा, केस नंबर 1। अगर अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है ना पॉजिटिव आई आपको कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, देन इसकी जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रहेगी ना, इसकी जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रहेगी, इट विल इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है ना, इसके अंदर दो केसेस बनेंगे बस। अगर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर पॉजिटिव, ओके, सेकेंड केस, अगर अल्फा 1 पॉजिटिव है एंड अल्फा 2 की वैल्यू नेगेटिव है, isn't it? But r naught 1 into alpha 1 will be greater than r naught 2 into your alpha. Done बेटा? Alpha equivalent positive है मतलब क्या है? Equivalent resistance will increase with temperature. In that case, alpha 1 alpha 2 both of them are positive. अगर आपका alpha 1 positive और alpha 2 की वैल्यू नेगेटिव है, then r naught alpha 1 must be greater than r naught alpha 2. ये बात याद रख लीजिए while doing the numericals. ठीक है, सेम पे केस नंबर 2 में जा रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अल्फा इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपको फाइनल करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है, इसमें भी दो केसेस है, सो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोथ विल बी नेगेटिव। ठीक है ना, अगर अल्फा 1 आपके पास पॉजिटिव है एंड अल्फा 2 की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, then in that case r naught 1 alpha 1 is lesser than or alpha 2 r naught 2 and alpha 2। ठीक है ना, चलो थर्ड केस, केस नंबर 3। अगर अल्फा इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन 0 आ गया, ठीक है ना, एंड इस वाले केस में जो है ना इक्विवेलेंट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर,
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर अल्फा 1 की वैल्यू पॉजिटिव है एंड अल्फा 2 की वैल्यू नेगेटिव है, then in this case we'll be getting the formula R1 alpha 1 will be equal to your R2 into your alpha 2. मतलब R1 by R2 will be equal to minus of alpha 2 divided by alpha 1. Very important. ठीक है, एक बार देख लीजिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर अगर टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना, तो उसको निकालने का तरीका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आर इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय, अगर अगर ऊपर वाले के केस में लिख रहे हैं अपन बेसिकली, तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू योर आर नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा आर नॉट 2 इंटू योर अल्फा 2 डिवाइडेड बाय योर आर 1 प्लस ऑफ योर आर। डन। केस 1 में क्या लिखा देखो मैंने, अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, then equivalent resistance increases with temperature, यानी अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर पॉजिटिव, अल्फा 1 पॉजिटिव एंड अल्फा 2 अगर नेगेटिव है, देन वैसे वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, अल्फा 1 R1 अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन R2। केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है, वैसे वाले ही केसेस सिंपल। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वन चलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। Parallel combination. So when resistors are connected in parallel combination, then R equivalent in parallel will be equal to summation of your alpha divided by R divided by summation of your value of 1 by R. Very important. R equivalent is equals to summation of alpha by R divided by summation of 1 by R. यानी alpha equivalent in parallel combination will be equal to, what are we getting, alpha 1 divided by R1 plus alpha 2 divided by R2 divided by, this value will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2. This will be your alpha equivalent. तो पूरा फॉर्मूला याद रखना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम लोग समेशन के फॉर्म में याद रख लें, दैट विल बी वेरी इजी टू डू द न्यूमेरिकल्स एट अ टाइम। तो 2 के लिए लिखा मैंने, उसी तरह से 3 के लिए भी लिख सकते हो, 4 के लिए भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम में कैसे दे रखा है बेसिकली। ठीक है ना, ऐसा मान के चलो एक रेसिस्टर है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, दिस वन इज वन मोर रेसिस्टेंस, दिस इज आर नॉट 1, दिस वन इज आर नॉट 2, दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2। ठीक है ना, तो वैसे वाले केसेस के लिए डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर्म। ठीक है ना, इसमें भी थोड़े केसेस है, जल्दी से इसको याद रख लीजिए, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट वन, अगर अल्फा इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पॉजिटिव है, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है ना, दैट विल बी इंक्रीजिंग, ये याद रख लीजिए। उसी तरह से अगर अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके कैलकुलेशन में नेगेटिव आई, तो आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, तो आर इक्विवेलेंट विल बी डिक्रीजिंग, विदाउट कैलकुलेशन यू कैन डू द आंसर्स फॉर दैट केसेस। अगर आपके पास अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद 0 आ गई, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर कांस्टेंट, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर कांस्टेंट, मतलब अल्फा 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ योर अल्फा 2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0, यानी R1 divided by R2 will be equal to your minus of your alpha 1 divided by alpha 2. Then, so this will be the answer for that. Then,
बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, बट स्टिल जितना भी किया मैंने मैक्सिमम हर चीज कवर किया हुआ है। तो इसके अंदर अगर कुछ मॉडल क्वेश्चंस आ गए तो आप लोग एक बार करने की कोशिश कर लीजिए। वैसे भी रिकॉर्डेड वर्जन में है, यू कैन सी इट ऑन द यूट्यूब। कहीं पर भी प्रॉब्लम है, कहीं कहीं कैलकुलेशंस मैंने बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया, इसलिए कि एक्सपेक्टिंग दैट इतना कैलकुलेशन तो आपको आता है बेसिकली। हम लोग बाद में फिर करंट डेंसिटी करेंगे बेटा। कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू डू यूनिट्स एंड डायमेंशन का। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजा है, दैट आई विल ट्राई टू सेंड यू इट टू द जनरल। उसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस के कल हम लोग प्रॉब्लम्स कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़े बच्चों को करंट डेंसिटी का थोड़े चैप्टर्स का एग्जाम था, इसलिए मैंने फास्टली एक बार रिवीजन कर दिया। सेल्स एंड भी है एंड मीटर ब्रिज है, दैट वी कैन डू इट इन द टुमारो सेशन ऑफ योर क्लास, ठीक है। चलो, टेक केयर बेटा, बाय।